Hello my dear students, welcome to all in the social science class once again. Dear students, today we are going to discuss how is federalism practiced in India and decentralization in India. So let's start our today's topics. Dear students, our constitution determines the sharing of powers between union government and the state governments, which is the basic structure of the constitution. For any change, it has to be passed by both the houses of the parliament. In case of any dispute regarding the division of powers, the Supreme Court makes a decision. As we already discussed in previous module. So dear students, now why do we see a success of federalism in India? The reason is it ensured spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become a shared ideal in our country. So the real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. The students, फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का होना ही नहीं है. इंडिया में रियल सक्सेस का मेन क्रेडिट हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का होना है. इसी से ही फेडरलिज्म के प्रति सच्ची भावना, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और एक दूसरे के साथ रहने की डिज़ायर यानी इच्छा हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश हुई. नाउ लेट्स डिस्कस some factors that make our country a true federal nation. Dear students, let us look at some of the major ways in which federalism is practiced. First off, creation of linguistic states. States on the basis of language. Creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country. In 1947, the boundaries of several old states of India changed. In order to create new states, and this was done to ensure the people who spoke the same language lived in the same state. But some states were created not on the basis of language but because of the culture, ethnicity or even geography. And these includes Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. So, when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. So dear students, जब लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाने की बात उठी तो कई नेशनल लीडर्स को इस बात का डर था कि ऐसे तो हमारा देश डिफरेंट स्टेट्स और पार्ट्स में टूट जाएगा, बिखर जाएगा. सो कुछ टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाने की बात को टाल दिया. पर हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने से कंट्री और भी ज़्यादा यूनाइट और स्ट्रॉन्ग हुई. और तो और इससे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पहले की बजाय और भी इजी हो गया. नाउ द सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन वाज द लैंग्वेज पॉलिसी. Our constitution did not give the status of national language to any of the languages. Hindi, of course, was identified as the official language, not the national language. Hindi is the mother tongue of only 40% of the Indians. So to safeguard and protect other languages, 21 other languages were recognized by the constitution. For a central government jobs, candidates may take the examination in any of these languages. States to have their own official languages.
Most of the work of the government takes place in the official language of the concerned states. The central government agrees to use English along with Hindi. So dear students, इंडियन फेडरेशन का जो सेकंड टेस्ट है वो है लैंग्वेज पॉलिसी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी सिंगल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया. सो इफ क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन यू विल राइट नो लैंग्वेज, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड किया, ऑल्दो सिर्फ 40% इंडियन पीपल की मदर टंग हिंदी है. सो अदर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है. सो हिंदी को मिलाकर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल लैंग्वेजेस. सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट इनमें से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है. हर स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. फॉर एग्जांपल, पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी, महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु एट्सेट्रा. सो स्टेट्स का मैक्सिमम वर्क उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होता है. कई बार बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन द इंडियन स्टेट्स इज डन इन विच लैंग्वेज, देन यू विल राइट द आंसर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट. नाउ वी आर डिस्कसिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस. Restructuring the center-state relations is one more way which has strengthened the federalism. Indian Constitution has distributed the powers among different levels, but the Union government can have influence over the state in many ways. In the past, central government misused the Constitution to dismiss the state governments. This undermined the spirit of federalism. But the Indian political scenario has changed after 1990s. This was the beginning of coalition government. Now, at the central level, no single party got a clear majority in Lok Sabha. So different parties had to enter into an alliance to form a government at the center. It led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of regional parties. So my dear students, you see here center state relations में जो continuously changes का ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि एक्चुअली फेडरल सिस्टम कितना मजबूत हुआ है. पावर शेयरिंग को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इनकी रियलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि रूलिंग पार्टीज और लीडर्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स को कैसे फॉलो करते हैं, किस रूप में उनको मानते हैं. काफ़ी लॉन्ग टाइम तक तो इंडिया में लगभग एक ही पार्टी का रूल रहा. यू नो वेरी वेल, दैट इज कांग्रेस पार्टी इन सेंटर एज वेल एज स्टेट्स. सो दिस मीन्स दैट स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी ऑटोनोमस पावर मीन्स अपनी इंडिपेंडेंट पावर का यूज़ ही नहीं किया, और स्पेशली तब जब सेंटर और स्टेट में डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट होती थी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के राइट्स, स्टेट्स की पावर्स को इग्नोर करने की कोशिश की. उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके अपोजिट पार्टीज की स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस यानी भंग कर देती थी, जो कि फेडरलिज्म की स्पिरिट के बिल्कुल अगेंस्ट है. मीन्स ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम है. बट 1990 के बाद से ये कंडीशन काफ़ी हद तक चेंज हो गई है. इस पीरियड में कंट्री में कई रीजनल पार्टीज एमर्ज हुई, और इसी टाइम से ही सेंटर में कॉलिशन गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हुई. इसीलिए 1990s को कॉलिशन इरा के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज लोकसभा में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली. सो कई डिफरेंट मेजर नेशनल पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस यानी एक गठबंधन बनाया और सेंटर में गवर्नमेंट बनाई. सो कॉलिशन गवर्नमेंट मीन्स व्हेन 2 or more parties join hands and makes a government is known as coalition government.
कोलिशन गवर्नमेंट बनने के बाद से पावर शेयरिंग यानी सत्ता के बंटवारे और स्टेट गवर्नमेंट के प्रति रिस्पेक्ट का एक नया कल्चर उभर कर आया। इस ट्रेंड को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी सपोर्ट मिली। इस डिसीजन की वजह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मनमाने ढंग से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती थी। उसके लिए अब ये काम मुश्किल हो गया। Thus, we can say that federal power sharing is more effective than it was in the early years after the constitution came into force. Now, we will understand the topic decentralization in India. In previous module, we have learnt that a federal government have two or more tiers of government. If we talk about our country, India, then it is not possible to run the whole country only through two levels of government, or you can say two tiers. In our country, states are as large as independent countries of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia, Maharashtra is as big as Germany, and the most important, these states are internally very diverse. So there is a need for power sharing within these states also. Federal power sharing in India needs a third tier of government is called local government. So dear students, it is clear from the discussion that decentralization is necessary. So students, you already read in federalism, there are two or more levels of government. But India जैसे इतनी वास्ट कंट्रीज की बात करें तो पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए सिर्फ 2 लेवल्स सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हमारी कंट्री के स्टेट्स ही यूरोपियन कंट्री से काफ़ी बड़े हैं। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश रशिया से भी बड़ा है, महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के इक्वलेंट है। इवन इंडिया के कुछ स्टेट्स में ही इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता है कि इन स्टेट्स में भी पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। इंडिया में फेडरल पावर शेयरिंग के लिए एक और लेवल यानी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है, जिसका लेवल स्टेट गवर्नमेंट से नीचे हो और फिर जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा गया। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज नेसेसरी इन इंडिया। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ decentralization and how can we define it. So students, decentralization means when power is taken away from the center and state governments and given to the local governments. The basic idea behind decentralization is that there are many problems and issues which are best settled at the local level. Local people have better knowledge of problems in their localities. Now, let us discuss the need for decentralization. The main reasons for decentralization are most of the states in our country are very large and have large population. These states are very diverse in culture, religion, language and traditions. Physical diversities are also found in different states. So, in order to fulfill the needs and aspirations of each and every people of different sections, there is a need for power sharing. Besides this, it is possible for the people to directly participate in the decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize powers to the level of village and towns. So बेटा, जब पावर्स सेंटर्स और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी जाती हैं तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे बेसिक आइडिया ये है कि डिफरेंट इश्यूज और प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पर बेटर वे से सेटल किया जा सकता है, बेटर वे से उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। बिकॉज लोकल पीपल को अपने एरिया के बारे में अच्छे से पता होता है, उन्हें बेटर नॉलेज होती है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है,
कहाँ पैसा खर्च किया जाए और बाकी सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। अब प्राइम मिनिस्टर को तो ये पता नहीं ना कि आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है। सो लोकल पीपल को ही अपने एरिया की बेटर नॉलेज होती है कि उनके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वन मोर थिंग, इससे लोगों में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की हैबिट भी इनकलकेट होती है। उन्हें लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने की आदत पड़ती है। सो लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Dear students, decentralization is the opposite of centralization. In the earlier stage, the power was centralized. So central government was more powerful than the state government. But now, gradually the power was decentralized, distributed among the states and the local governments. Let us see how it was done. A major step towards this decentralization was taken in 1992. So, now it became constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. Constitution was amended, means changed, was improved to make a third tier of democracy more powerful and effective. Reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. At least 1/3 of all positions are reserved for women. An independent institution called the State Election Commission will conduct panchayat and municipal elections, that is local elections. So my dear students, major steps towards centralization was taken in 1992. So बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसमें चेंजेस लाकर डेमोक्रेसी के थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को और पावरफुल एंड इफेक्टिव बनाया गया। बेटा पहले लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पर नहीं होते थे, मींस हर 5 इयर्स के बाद इलेक्शंस नहीं होते थे। बट अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया है कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन रेगुलर होंगे, मीन्स रेगुलर इलेक्शंस आर कंपल्सरी फॉर local governments. 1/3 seats scheduled caste, scheduled tribes और other backward classes के लिए रिजर्व कर दी गई हैं और एटलीस्ट 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। हर स्टेट में पंचायत और म्यूनिसिपल यानी नगर पालिका के इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन नाम से एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने कुछ पार्ट्स और स्टेट से होने वाले इनकम का कुछ हिस्सा लोकल गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। दिस इज अ काउंसिल consisting of several ward members, often called Panch, and a president or Sarpanch. So the Panch and a Sarpanch directly elected by all the adult population living in that ward or village. बेटा रूरल एरिया में या रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज लाइक ए काउंसिल जिसमें कई मेंबर्स होते हैं जिन्हें अक्सर पंच कहा जाता है और एक प्रेसिडेंट यानी प्रधान होता है जिसे सरपंच कहा जाता है। इनका इलेक्शन यानी चुनाव आप ये कह सकते हो कि गांव या वार्ड में रहने वाले सभी अडल्ट मेंबर्स के थ्रू होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ पंचायत। वेल, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। The panchayat works under the overall supervision of Gram Sabha and all the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. So बेटा पंचायतों का काम ग्राम सभा की सुपरविजन में होता है। सभी अडल्ट मेंबर्स
और वी कैन से वोटर्स इसके मेंबर्स होते हैं। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस देखने के लिए काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसे एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स मीटिंग्स करनी होती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, a few gram panchayat are grouped together to form what is usually called a panchayat smiti or blok or mandal. So the member of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. All the panchayat smitis or mandals in a district together constitute the Jila Parishad. And Jila Parishad chairperson is the political head of the Jila Parishad. बेटा, रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाई जाती है। इसे ब्लॉक या मंडल भी कहा जाता है। इसके मेंबर्स का चुनाव उस एरिया के सभी पंचायत मेंबर्स करते हैं और डिस्ट्रिक्ट की सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। लोकसभा के मेंबर्स और उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलएज और जिला स्तर के कुछ ऑफिसर्स भी इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद का चेयरपर्सन ही जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है। इट मींस पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद इज चेयरपर्सन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। Similarly, local government bodies exist for urban areas. Municipalities are set up in towns and municipal corporations are set up in the big cities. Both are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. So, municipalities or municipal corporations, the members are elected by the people of a particular area. Municipal chairperson is the head of the municipalities or municipal committees, whereas mayor is the political head of municipal corporation. Overall, there are about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities, and 1/3 of them are women, which increased women's voice in our country. So, my dear students, अर्बन एरियाज में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ या आप कह सकते हो म्यूनिसिपल कमिटीज़ होती हैं, जबकि बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप होती हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों को ही पीपल के थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्रोल करते हैं, उनका सारा कामकाज संभालते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कमेटी के पॉलिटिकल हेड को चेयरपर्सन कहा जाता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पॉलिटिकल हेड को मेयर कहा जाता है। इंडिया में म्यूनिसिपैलिटीज़ और ग्राम पंचायत के लिए अप्रोक्सीमेट 36 लाख लोगों का चुनाव होता है और यह नंबर वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिए जाने के कारण हमारी डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। लोकल गवर्नमेंट में वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करने से हमारी डेमोक्रेसी ने उनकी आवाज़ को और मजबूत किया है। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। इन आवर कंट्री, लोकल गवर्नमेंट्स फेस मैनी डिफिकल्टीज। मेजर डिफिकल्टीज आर elections are not held regularly. The people do not take part enthusiastically in elections. Even more serious problem is that Gram Sabha are not held regularly. Most state governments have not transferred significant or important parts to the local governments. Local government also have not given adequate resources. In conclusion, we can say that we have to travel a long way from realizing the ideals of self-governments. So dear students, with this I conclude the chapter. I hope that
all of you have got the chapter very well. Thank you. Stay blessed, stay happy. Bye bye.